जम्मूकश्मीरे शोपियां जनपदस्य तुलरानक्षेत्रे सुरक्षाबलैः निगडने लश्कर-ए-तैयबा गुल्मस्य 3 आतङ्कवादिनः मारिताः। एकस्य अभिज्ञानं गान्दरबलस्य मुख्तार शाह रूपेण अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन अफगानिस्तानं समालक्ष्य G20 नेतॄणां शीर्षोपवेशने भागं ग्रहीष्यति। एतस्मिन् शीर्षोपवेशने सुरक्षा, आतङ्कवादं विरुध्य कार्ये गतिशीलता, मानवाधिकारेषु चर्चा च समाविशते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य 28तमं स्थापना दिवस कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। अस्योद्देश्यमस्ति देशे मानवाधिकाराणां प्रोत्साहनं, संरक्षणं च। भारतीय नौसेना जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी देशानां नौसेनाभिः सह बहुपक्षीय समुद्रीय अभ्यासमालाबारस्य द्वितीये चरणे भागं भजिष्यति। एषः नौसैनिक सैनाभ्यासः बंगालखात्याम् अक्टूबर मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् चलिष्यति। देशे साम्प्रतं यावत् 82,95,95 कोट्यधिकानि कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः सायं 7 यावत् 59,00,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। कोलकाता नाइट राइडर्स दलं ह्यः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलं 4 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितवत्। एतेन जयेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं द्वितीयान्तिमचक्रे प्रविष्टवत्, यत्र तस्य द्वन्द्वः दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मूकश्मीरे शोपियां जनपदस्य तुलरानक्षेत्रे सुरक्षाबलैः निगडने लश्कर-ए-तैयबा गुल्मस्य 3 आतङ्कवादिनः मारिताः। एकस्य अभिज्ञानं गान्दरबलस्य मुख्तार शाह रूपेण अभवत्। मुख्तारः बिहार निवासिनं वीरेन्द्र पासवानं हत्वा गान्दारबलतः शोपियां जनपदम् आगतवान् आसीत्। मृतातङ्किनां पार्श्वे प्रचुरमात्रायां शस्त्राणि उपलब्धानि। आरक्षिबलेन, सुरक्षाबलेन च तस्मिन् क्षेत्रे अन्वीक्षणं क्रियते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन अफगानिस्तानं समालक्ष्य G20 नेतॄणां शीर्षोपवेशने भागं ग्रहीष्यति। असौ G20 समूहस्य अध्यक्षः इटली देशस्य निमन्त्रणे अस्मिन् शीर्षोपवेशने भागं ग्रहीष्यति। विदेश मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्य शीर्षोपवेशनस्य कार्यसूचौ मानवीय आवश्यकतायै कार्ये जातम्, अथ च प्राथमिक सेवाः तथा वृत्त्यवसरं प्रति प्राप्तुम् अपि चर्चा भविष्यति। एतस्मिन् सुरक्षा, आतङ्कवादं विरुध्य कार्ये गतिशीलता, मानवाधिकारेषु चर्चा च समाविशते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री बोरिस जॉन्सन इत्यनेन साकं वार्तां कृतवान्। भारत ब्रिटेन 30-अधिक-2000 शताब्दीकं विषयम् अधिकृत्य तेन प्रगत्याः समीक्षा अपि कृता। प्रधानमन्त्री इतः प्राक् अफगानिस्तानं समालक्ष्य शंघाई सहयोग परिषद इति सामूहिक सुरक्षा संधि संघटनस्य शिखरोपवेशने भागं गृहीतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशनावधौ पृथक् रूपेण अफगानिस्तानं समालक्ष्य G20 देशानां विदेशमन्त्रिणाम् एकस्मिन् उपवेशने भागं गृहीतम् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वस्य विभिन्न मञ्चेषु अफगानिस्तानस्य मानवीय पक्ष सम्बद्धेषु विषयेषु चर्चाम् अकरोत्। सममेव असौ अफगानिस्तानस्य समस्यानां निराकरणाय अन्य देशान् प्रार्थितवान्। यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का
अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य अंतर्जालीय माध्यमेन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगस्य 28तमं स्थापना दिवस कार्यक्रमं संबोधयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् गृहमन्त्री अमित शाहः मानवाधिकार आयोगस्य अध्यक्षश्च उपस्थितः भविष्यति। आयोगस्य स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमस्य अन्तर्गतं 93-1993 वर्षे अक्टूबर मासस्य 12 दिनाङ्के मानवाधिकाराणां प्रचाराय संरक्षणाय च कृता आसीत्। अस्योद्देश्यमस्ति मानवाधिकाराणां प्रोत्साहनं संरक्षणं च। आयोगः मानवाधिकाराणां कीदृशस्यापि उल्लङ्घनस्य संज्ञानं स्वीकरोति, अन्वीक्षणं करोति अथ च उल्लङ्घनप्रकरणेषु पीडितेभ्यः साहाय्यराशिं प्रदातुम् अधिकारिभिः समं परामर्शं करोति। भारतीय नौसेना जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी देशानां नौसेनाभिः सह बहुपक्षीय समुद्रीय अभ्यासमालाबारस्य द्वितीये चरणे भागं भजिष्यति। एषः नौसैनिक सैन्याभ्यास बंगालखात्याम् अक्टूबर मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् चलिष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् अस्य अभ्यासस्य प्रथमचरणस्य आयोजनम् अस्मिन् एव वर्षे अगस्त मासस्य 26 दिनाङ्कतः 29 दिनाङ्कं यावत् फिलीपीन्स समुद्रे अभवत्। अस्य द्वितीये चरणस्य नौसैनिक सैन्याभ्यासे भारतीय नौसेनायाः INS रणविजय, INS सत्पुड़ा इत्येतौ युद्धपोतौ, P-8I इत्येतत् परिचरविमानम्, एकः जलान्तपोतः च सम्मेलिताः सन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकायाः नौसेनायाः प्रतिनिधित्वं USS कॉर्ल विल्सन, USS लेक शैम्प्लेन, USS स्टॉकडेल इत्येते युद्धपोताः करिष्यन्ति। जापानस्य नौसेनायाः प्रतिनिधित्वं JS कागा, JS मुरासामे इत्येतौ युद्धपोतौ करिष्यतः। सममेव रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इत्येतस्य नौसैन्यबलस्य प्रतिनिधित्वं HMAS बेलेराट, HMAS सीरियस इत्येतौ युद्धपोतौ करिष्यतः। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणोन्मूलनाय भारतम् अनवरतं स्वीयं लक्ष्यं प्रति विवर्धतेतराम्। देशे साम्प्रतं यावत् 82,95 कोट्यधिकानि कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। एतस्मिन् 61,68 कोट्यधिकानि प्रथममात्रिक सूच्यौषधानि, 21,27 कोटि संख्याकं यावत् द्वितीयमात्रिक सूच्यौषधानि अस्ति सम्मिलितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् ह्यः 62,सहस्रोत्तर-49 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अवधेयमस्ति यत् देशस्य सर्वाधिक संवेदनशील समूहः कोरोना संक्रमणात् विमोचनाय व्यापक सूच्यौषधाभियानस्य उच्चस्तरीया समीक्षा अनवरतं विधीयते। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना ह्यः भारतीय अंतरिक्ष संघस्य शुभारम्भः कृतः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् भारतेन इदं सुनिश्चितीकर्तव्यमस्ति यत् 21तम्यां शताब्द्याम् अंतरिक्षक्षेत्रे विश्वम् एकत्रीकर्तुं भारतं महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयिष्यति। सः उक्तवान् यत् भारतं तेषु कतिचन राष्ट्रेषु समाविष्टमस्ति यद्धि अंतरिक्षक्षेत्रस्य समस्त प्रौद्योगिकीं सन्धत्ते। ह्यः भारतीय अंतरिक्ष संघस्य शुभारम्भावसरे श्रीमोदी कथितवान् यत् भारते अंतरिक्ष उपग्रहाणि, प्रक्षेप्य यानानि, अंतर्ग्रहीय अभियानानि सम्बद्ध प्रौद्योगिकीं सन्धत्ते। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् अद्य भारते अंतरिक्ष क्षेत्रे, अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्रे च क्रियमाणाः परिष्काराः विधीयन्ते, यतोहि निर्णयं स्वीकरणाय सक्षम प्रशासनमस्ति। सः उक्तवान् यत् अंतरिक्षक्षेत्रे तत्सम्बद्ध तकनीकी क्षेत्रे च परिष्काराः अभूतपूर्वगत्या विधीयन्ते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अंतरिक्ष सम्बद्ध परिष्कारान् समालक्ष्य प्रशासनस्य दृष्टिकोणः 4 विशेषस्तम्भेषु आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् नैजक्षेत्रे नवाचारस्य स्वतन्त्रता प्रथमस्तम्भः वर्तते, एकेन सम्बलरूपेण प्रशासनस्य भूमिका इति द्वितीयस्तम्भः वर्तते, युवकान् भावी जीवनाय सन्नद्धीकर्तुं सामान्य जनानां प्रगत्यै अंतरिक्षक्षेत्रम् एकं संसाधनरूपेण अवलोकनं च अन्यौ 2 स्तम्भौ स्तः।
सः उक्तवान् यत् अयं रणनीतिः भारतस्य तकनीकी विशेषज्ञतायाः आधारेण राष्ट्रं नवाचारस्य वैश्विककेन्द्रत्वेन विनिर्मास्यति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गत 7 वर्षावधौ राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुति प्रशासनेन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीं पारदर्शी प्रशासनस्य एकं महत्वपूर्णम् उपकरणं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतस्य अंतरिक्ष क्षेत्रं 30 कोटि जनानां प्रगत्याः एकं बृहत् माध्यमम् अस्ति। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को आधार बनाकर भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल सेंटर बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ग्लोबल डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाए, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज और टैलेंट की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ाए। श्री मोदी उक्तवान् यत् राष्ट्रम् अद्य गतिशील परिष्कारान् अवलोकयत् अस्ति, यतोहि भारतस्य दृष्टिकोणः स्पष्टः अस्ति, तद्धि आत्मनिर्भर भारतम्। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने डिफेंस, कोल और माइनिंग जैसे सेक्टर पहले ही खोल दिए हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है और जहां सरकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन कर रही है। अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है, वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः मध्य एशियायाः स्वयात्रायाः द्वितीये चरणे कजाकस्थानस्य राजधानीं नूर सुल्तानं सम्प्राप्तः। डॉक्टर एस जयशंकरः अत्र एशियायां संवादस्य विश्वनिर्माणस्य च उपायाः इत्येतस्मिन् विषये आयोज्यमाने 6ठे मन्त्रिस्तरीये सम्मेलने भागं भजिष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् CICA इत्यस्य मञ्चस्य वर्तमानाध्यक्षः अस्ति। डॉक्टर एस जयशंकरः कजाखस्तानस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च सह द्विपक्षीयम् उपवेशनम् अपि कर्तुं शक्नोति। विदेशमन्त्रिणा उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्रिणा अब्दुल अजीज कामिलोव इत्येतेन सह द्विपक्षीयम् उपवेशनं कृतं। नेतृद्वयस्य वार्ता अफगानिस्तानस्य घटनाक्रमे आधृता आसीत्। डॉक्टर एस जयशंकरः तुर्कमेनिस्तानस्य विदेशमन्त्रिणः राशिद मेरेदोव इत्येतम् अपि अमिलत्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग विषये चर्चां कृतवन्तौ। नेतृद्वयं निकटवर्ती देशानां घटनासु स्वविचारान् प्रकटितवत्। केन्द्रशासित प्रदेशस्य जम्मू कश्मीरस्य पुंछ प्रभागस्य सूरनकोटे चामरर वनक्षेत्रे एकस्मिन् संघर्षे कनिष्ठ सैन्य अधिकारिणा सह 5 सैनिकाः वीरगतिं प्राप्ताः। सूचनानुसारेण पुंछ क्षेत्रस्य अस्मिन् वनक्षेत्रे आतंकवादिनः प्रविष्टाः आसन्। अत एव सुरक्षाबलैः वनक्षेत्रे निरीक्षण अन्वेषणाभियानं प्रचालितम् आसीत्। अस्मिन् एव क्रमे आतंकवादिनः सैनिकेषु गोलिका प्रहारं कृतवन्तः, येन 5 सैनिकाः गम्भीररूपेण व्रणिताः अभवन्। अनन्तरम् उपचारसमये एते मृत्युं सम्प्राप्ताः। संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवः अन्ताराष्ट्रियं समुदायम् अफगानिस्तानस्य अर्थव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं वित्तीय साहाय्यप्रदानस्य आह्वानम् अकरोत्। एंटोनियो गुटेरेस इत्येषः उक्तवान् यत् यदि अस्मिन् संकटकाले वयम् अफगानिस्तानस्य सहायतां न करिष्यामः तर्हि तत्र मानवतायाम् अधिकं संकटं भविष्यति। तेनोक्तं यत् शीघ्रमेव सर्वैः देशैः अस्यां दिशि प्रयासः करणीयः। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के तालिबानेन अफगानिस्तानस्य सत्ता परिवर्तनं कृतं, येन देशस्य स्थितिः संकटापन्ना दृश्यते।
एकविंशतितमवर्षीयस्य नोबेल पुरस्कारस्य घोषणा प्रचलति। अस्मिन् एव क्रमे ह्यः सोमवासरे अर्थशास्त्रस्य क्षेत्रे पुरस्काराणां घोषणा अभवत्। संयुक्तराज्यामेरिकायाः त्रयः विजेतारः डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो एम्बेन्स् इत्येते नोबेल पुरस्कारस्य सूच्यां सन्ति। नोबेल पुरस्कारस्य समितिः डेविड कार्ड इत्येतस्मै श्रमार्थशास्त्रे स्वप्रयोगसिद्धयोगदानार्थं पुरस्कारस्य अर्धांशं सहैव अपरम् अर्धांशं जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो एम्बेन्स् इत्येताभ्यां प्रदत्तवती। स्वीडिश अकादमी इत्येतस्याः संस्थायाः अनुसारम् अनपेक्षितप्रयोगेभ्यः सहजप्रयोगेभ्यः वा निष्कर्षप्राप्तेः दिशि कार्यं करणाय एषः पुरस्कारः प्रदत्तः। ह्यः कोलकाता नाइट राइडर्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलं 4 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितवत्। एतेन जयेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं द्वितीयान्तिमचक्रे प्रविष्टवत्, यत्र तस्य द्वन्द्वः दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह भविष्यति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।